Question number 30 is a A wooden wooden block block. Keep it. a wooden block moves along a horizontal or frictionless surface as shown in figure 2.1. The block has a mass of 85 grams and moves to the left with a velocity of 2. A steel ball of mass 4 grams is fired to the right. The steel ball, moving horizontally with a speed of 45, collides with the block and remains embedded in it. After collision, the block and steel ball both have a speed v. Calculate v. And when the formula लगाएंगे ना Yes. क्योंकि Momentum same before and process momentum after the collision. Okay. ठीक है So यहाँ पे momentum before collision. The mass of the first body or the steel ball is 4 4 grams है. So we should have to पर दोनों ग्राम्स में ना फिर भी दोनों साइड्स पे कर दें तो दोनों ज़्यादा अच्छा है. बाद में 4 10 power minus. This is of multiply by its velocity is 45. Next, plus plus the mass of the second block is 5 85 10 power and its velocity is 2 just 2. just 2 It's minus opposite opposite direction equals to the combined mass 4 plus 85 4 5 whole 10 power minus 0 10 हाँ v multiply by next is a subchecker. एक नहीं सर एक मिनट रुक जाओ 0.11235 0.115. Okay. ठीक है Next is for the blocks and balls, the relative speed of approach is m1 rel- u1 relative speed of u1 plus u2 equals to v2 plus v1 relative okay speed of ऐसे ऐसे कुछ है दो f1 oh so q1. q1 is 5 minus 1 2 plus 40 हाँ जी 47 is the of approach. Next is relative speed of separation after the separation so relative speed of से all formula में separation relative speed of separation equals minus ये होता है यहाँ पे आंसर होगा 0 वाई क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम बन गया हाँ because they didn't separate after the हाँ जी because after they stick together
Percussion, they stick together. Choose your answer in part 1 to state and explain whether the elastic or inelastic. Elas. Inelastic because their I think मैंने तुझे change their तो नहीं करा. velocity change, relative speed of approach 47, Oh ठीक but the है. speed of इस separation. लिहाज से तो हाँ. हाँ तो हम जी. लिखेंगे inelastic Yeah. elastic. क्यों? Because जगह थोड़ी Kind of gonna changes. because relative speed of approach relative speed of approach relative of separation. Relative speed of approach is not equal. Next is use Newton's third law to explain the relation. Third law को use the rate of change Hmm. of momentum of ball and rate of change of log due to collision. तो हम कहेंगे for example this is the ball, one is the block. The ball exert force on the block exert a force on the ball. The forces are equal but opposite in direction. So there will be a equal change but in direction. Okay? ठीक है. तो हम कहेंगे momentum remain. तो इसमें कहते हैं force on block, force on block is equal equal to the force on the ball on the ball, yeah, ठीक but है. in opposite direction, but in opposite Direction. direction. क्या लिखें? Force on block is on the ball but in opposite. As force rate of rate of term. So the rate of change of term, therefore, rate of change of of momentum of change of momentum equal rate of change of momentum are equal opposite. Rate of change of momentum are equal and opposite. Next is state the Newton's second law of motion. Newton's second law of motion क्या होता है? Change in momentum. The resultant force, Product of resultant force. force
resultant force directly proportional equal to Isn't is is equal to the rate of change of momentum. rate of change. The rate of rate of change of Momentum. momentum. Next पढ़ें बच्चे question. A toy rocket consists of a container of water and compressed air as shown in figure 3.1. Water is pushed vertically downwards through a nozzle by the compressed air. The rocket moves vertically upwards. The nozzle has a circular cross section of radius 7.5 mm. The density of the water is 1000 kilograms. Assume that the water leaving the nozzle has the shape of cylinder of radius 7.5 and a constant speed of 13 relative to the rocket. Show that the mass of water leaving the nozzle the first 0.20 seconds after the rocket launches is 0.46 kilograms. Okay. The time is 0. Point. So how many radius of the nozzle, density of water, and the time duration. Radius So have to find how much the mass. क्या use करें? F m equals to density divided by volume. Oh, very good. S equals density multiplied by the Yeah, volume. multiply 100. तो यहाँ पे mass equals density 1000 है ना? Hmm. Density तो 1000 आ गई है. And what's the volume? Volume क्या लेंगे हम? Radius भी है, height है, high. कौन Radius सी है ना? शेप लेंगे? कोई में देख. डिस्टेंस चाहिए होगा, तो स्पीड भी है, टाइम भी है. तो शेप बन रही है. हाँ, तो हम डिस्टेंस कैसे करते हैं? Volume of स्पीड cylinder is डिस्टेंस बाय pi टाइम. r square h हम्म. pi r. R is radius 7.5 7.5 power minus 3. 3. And height के लिए Speed uh, equals to distance by time. speed into is 13. the time is 0.20. point. Volume to 4.59 अच्छा, volume 4.59 आगे multiply by by 10 power. 10 minus 4. ये वॉल्यूम यहाँ लिखता हूँ 0.59 power minus 4. Multiply by 1000. Yes, -1 रह जाएगा. 0.459. हाँ जी, प्रूफ हो गया. 6. ये इम्पोर्टेंट है, ऑल दो ये हमने कल भी ऐसे ही किया, हाँ. की. Next is calculate the change in momentum of the mass of water in B part 1 due to the nozzle. Change in momentum of the mass of water. Change in momentum कैसे निकालते हैं? In momentum is P
minus uh, mu और constant कॉमन ले लेते हैं speed. माइनस Constant डेल्टा speed. मास कितना है 0.46 इज Hmm, कांस्टेंट इज जीरो okay. शुरू में तो रेस्ट पर होगा ना Hmm, not mentioned और though. टॉय रॉकेट का रेस्ट शुरू में इट्स रेस्ट एयर एंड water is pushed vertically downward to the nozzle by the compressed air. It moves vertically. Water is until Okay. allow the water to. So next is the change in momentum 5.98. is 5 point, which is 6 Maybe. 6.0 लिख देते Next part. The force exerted on this mass of the water by the rocket is F equals force to change in momentum divided by time to 6 divided by 0.20. delta P over delta T. Change in momentum 6 divided by the time is 30. okay. So No, no, no. It's 0.2. that Answer point 30. Yeah. answer is 30. So G. force is ये तो अब हम देखें अब हमें पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें वो इन मोमेंटम इज फोर्स इज डिफरेंट और अगर कोलिजन हो रही है देन वी प्रेफर मोमेंटम टर्म आफ्टर और state and explain how the new applies to the movement of rocket by the water movement of rocket by the water क्या कहेंगे अभी हमने कौन सी फोर्स निकाली है फोर्स exerted on this mass of water by rocket. Hanji. So this is the force exerted by the rocket. हम लिखते हैं the rocket exert 30 newton force rocket exert a 30 ton force on water. The water rocket exert 30 newton force on water. The water also exert water also exert the water also exert a 30 newton 30 newton force on the rocket on the rocket in opposite direction opposite direction मतलब न्यूटन थर्ड लॉ है कि ये आपके पास अगर रॉकेट था और यहाँ ये फॉर एग्जांपल वन इज द रॉकेट और यहाँ से वाटर निकल so the force exerted by the rocket on the water is down 30 newton. So in reaction, water also exert a force on the rocket in upward direction. That's Hanji. why the rocket starts to move upward. Upwards. Next पढ़े The container has a mass of 0.40 kilograms. The initial mass of water before the rocket is launched is 0.70 kilograms. The mass of the compressed air in the rocket is negligible. Assume that the resistive force on the rocket due to its motion is negligible.
For the rocket at a time of 0.20 seconds after launching showed that its total mass is 0.64. ये पहले नहीं किया. पहले हमने क्या किया था? फाइंड किया था Mass show that the mass of mass of water. water leaving the nozzle in first बस इतने टाइम में कितना पानी निकल how much water leaves the nozzle 0.2 अब हमने फाइंड total mass for the rocket at time 0.2 second after launch so, so that its total mass is 0.6 is the total mass of the rocket when it launched तो इसमें अब याद रखना Thank you. अब यहाँ पे लिखा हुआ है container has a mass this is the container or the initial mass of water before the rocket is launched of rocket of container so container का mass हो गया plus initial mass of water उसमें से पानी कितना निकल रहा है माइनस water 0.46. mass of water लिख देते so mass of container 0.4 mass of the water is 0.70. minus mass of water leaving water thing is 0.46. आंसर क्या होता है 0.64. बस ठीक 0 point हमने बस देखा कि व्हाट्स द टोटल mass हाउ मच द mass इज लीविंग सब्ट्रैक्ट किया सो यू total mass after the launch 0 points okay next is calculate its acceleration कैसे find करेंगे Uh, F equals to ma. F equals ma Mass भी this है. is the resultant आगे resultant force is rocket है ना the Yes. weight of the rocket is acting downward Number. the resultant force is acting upward तो हम ऐसे लिख 30 होगा. हाँ जी तो 30 minus equals to 0.64 multiplied by 9.81 0.4 multiply multiplied by by 8. side But wait to 0.64 multiplied by 9.81 नहीं होगा. to 9 point here you have 0.4 into a कह सकते 37.065. 37.5 37 30 Hmm. per second any confusion No, sir. next state the principle of conservation of In momentum is in a closed नहीं, the sum of total. You know, external force नहीं होता उसके ऊपर. वो वाला नहीं है. In a closed system, the sum of तो हम क्या लिखेंगे momentum before and after. इसमें हम लिखते हैं ये uh, for isolated system Yes. Closed. इसे closed लिख सकते हैं. for an Yes. ice Sum of
sum of Total interaction. total Ah, before interaction. momentum Uh, Question number interaction 30. equal. Sum of total momentum of a system of bodies is called constant. और सुनो ऐसे लिखो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, लेकिन ये मैं ज़्यादा लिखता हूँ द Or सम ऑफ sum of टोटल total momentum मोमेंट। before, or sum of total momentum after for niceless हाँ for niceless. लिखा हुआ है ये। तो द सम ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन इक्वल्स टू द सम ऑफ टोटल मोमेंटम After आफ्टर इंटरेक्शन। आफ्टर interaction. interaction. Next is a stationary firework explodes into three different fragments that move in a horizontal pair. 2.1. तो यहाँ पे बचे आपके पास कितने बन रहे हैं fragments? The two is moving downward, Crew का one तो is moving बनाना in. पड़ना, crew का वो चीजें Their, बनाना पड़ना. their masses and velocities are given. Yes. Next, use the principle of conservation of determine the, तो इसमें हम कौन सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले हाँ परपेंडिकुलर लेना पड़ना. चलिए कंपोनेंट पहले बनाते Hmm. हैं का एक कंपोनेंट तरफ Yep. Downwards. या Left. तभी Downward. अब हमने ये है अलोंग वाई एक्स Hmm. ताकि वो कवर हो जाए अलोंग वाई तो लिखेंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन इनिशियली तो वो रेस्ट पर होगा ना ये तीनों Hmm. चीजें तो a stationary firework and now after the explosion momentum of first one is m m multiply by 7 सही है Yes. minus because other two are in opposite direction minus क्या बनेगा ये m M into m into multiplied by 6 6 sine theta ना sine, yeah, sine of or the next plus one plus plus y plus दोनों सेम डायरेक्शन में. but over ओ माइनस ले ऐसे भी कर लो, ठीक है, मैं बड़ा ब्रैकेट. माइनस हम्म. अच्छा अच्छा वो कर माइनस हाँ. यहाँ पे आएगा 1.5 8 sin थीटा. एम कट हो जाएंगे. अब इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं एफ इज इक्वल 7 इंटू कम्स 21 यहाँ यप. पे मैं लिख देता हूँ माइनस 6 इंटू 2 कम्स 12 12 sin थीटा. 12 m Sin थीटा. here you have 1.5 into 8 is 12 12 m sin sin theta sin equals to 0. next is ये भी 12 m है ये 12 m and minus minus become plus Plus कितना हो जाएगा minus 12 plus 12 becomes 24 m sin theta. sin theta Hmm. equals 0. Now we shift them to the other side 21 and 24
4m M sine theta. Hmm. फिर कर रहा 1 divided by 24 sine inverse. साइन या इक्वल्स 21 Over 24. 61. 1 1. डिग्री। चेक करें इसका आंसर सही है, सही लग रहा है। Question number 32, I. 61. कैलकुलेट द रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Number 2 squared. काइनेटिक ऑफ फ्रैगमेंट वो लिखेंगे, क्या होगा बच्चे फॉर्मूला? हाफ mv squared. डायरेक्टली हाफ एंड इट्स mass is velocity is 6. divided by the kinetic energy of half the mass is 1.5 m, velocity 8. is 8। देखिए mm हाफ cut. हाफ हाफ भी कट हो जाएगा, Uh, हाफ जस्ट आपके पास 0.5 इंच Plus 72, Leko, divided by divided by 1.5. 500 by 8 squared divided by 96. फ्रैक्शन में ही बताना है, डेसिमल 3 divided by 4. रेशियो आंसर 32. 0.75. पॉइंट्स में लिखा हुआ है इन्होंने Yes. 0.7। 3:4 नहीं लिखा हुआ आंसर। 0.75. 72 divided by 96 is 0.75। Yes. Next is the child on a sledge slides down, right down the hill and then travel in a straight line up an ice covered slope। मैं तो बस ये बताया कि डाउनवर्ड आ रहा है and then moving upward from A to B। The sledge passes point A with 18 meter per second. Initially the speed second at time t equals 0 and then comes to rest at point B. Here the velocity becomes, the child applies a brake to the sledge at point B. The brake doesn't keep the sledge still and it immediately slide back और वो फिर पीछे की तरफ move करता है। The variation with the t of the velocity v of the sledge from 0 to 24 second is bigger. State the time taken for the sledge travel from A to B। A to B आपको कितना टाइम लग रहा है? देखें, initial speed is this 18 Hmm. 18. और your point 18. A Okay. or at B the velocity becomes 0, so So this is point 12. 12 second 12 second यहाँ पर मैं from graph। Next is, remember the displacement of the sledge up the slope from front of the sledge up the slope A at time 20। डिस्प्लेसमेंट आपने निकालना है, तो इनिशियली One इट over इज 2. हाफ बेस इनटू हाइट लगा देना, Yeah. हाफ बेस
base is 12, 12, height 18, minus the rule number downward 2, 1 over 2. The base is 12, 12 again, and the 12. distance is 1, 6. 5. ऑलरेडी हमने माइनस लिया, तो आंसर चेक करें कितना आता है। 0.5 multiplied by 12 multiplied by 18, 108 108 minus minus 36. 36. Now it's 72. 70. क्योंकि वो पहले तो वो ए से बी पर गया और फिर वहां से वो वहां से ब्रेक लगाने के बाद वो कुछ नीचे भी आया, तो हाउ मच ही कवर्स द डिस्टेंस, ऊपर जाते वक्त कितना था 10, फिर वो 36, 36 वो रिटर्न हो गया, तो Hmm. अब द स्लोप he just covers 72, not 10. Show that the acceleration of the sledge as it moves from B back towards A is acceleration. हम वो 12 to 24 वाला seconds वाला point लेंगे ना, deceleration वाला, नीचे वाला. Acceleration equals V minus comes 6 Minus 6. Oh. 0 or divided by 12. divided by 12. So 0.5. तो acceleration दोबारा लिख देता हूँ, minus 4 minus. Answer is Equal to 0.5. 0.5 meter per Oh. second. The child and sledge has total mass of 70. Component of the total weight of the child and the sledge that acts downward is 80. determine the frictional force on the sledge as it moves from A B towards A. ये नीचे आ रहा मोमेंटम बदला करेंगे हम. है क्या? हम कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे. ये इस अब वो B से A, this is the weight, और उन्होंने बताया the component of total weight of the child and the sledge that acts downward is 80 Newton. This one is 80 Newton. और क्या कर सकते, वन फोर्स, और वो नीचे की तरफ आ रहा है, कि आपके पास है एक फोर्स और फ्रिक्शनल। तो पहले हम क्या करते हैं, कंपोनेंट, सोचिए एक कंपोनेंट तो ये बनेगा ना, और रेड रेड में बने, अलोंग द स्लोप कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन थी, साइन. एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स, क्या, एंड वन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फोर्स को क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स, सही है। यस. तो और अब हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं, नेट, 1 2 ऐसे 3. लिखते हैं, नेट फोर्स इक्वल्स, तो ओह. नेट फोर्स में हम नेट फोर्सेस माइनस एम, एम इज 0.5. 70.5, So 70 multiplied by 0.5. 0.5
minus 80, 45 plus. 45. 45 is the okay. The angle theta of the slope to the horizontal. अब आपने एंगल थीटा फाइंड करना है ना हॉरिजॉन्टल ये एंगल थीटा तो थीटा फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं एम जी साइन थीटा 嗯 में कौन सा फॉर्मूला लगाएं I don't know, sir. रिजॉल्व नहीं करनी चाहिए वो. सॉल्व तो मैंने एम जी साइन थीटा ले लें चलें या एम जी साइन थीटा द नेट और यहाँ से क्या इक्वल क्या बन जाएगा साइन वर्स 80 ओवर एम जी एम इज द mass mass कितना था 70 is 9.8 6.69. 6.6 6.7. आंसर चेक करना 33. 0.7 डिग्री लिख 6.7 कौन सा पार्ट है? डिग्री VII. पार्ट 6.7. 6.7 नेक्स्ट क्वेश्चन The child on the sledge blows a whistle between T4 and T8. The whistle emits sound of frequency 900 Hz. The speed of the sound in the air is 340. A man standing at point A hears the sound. Use figure 3.2 to determine the initial frequency of the sound heard by the man. frequency of the sound heard by the man ये तो वेव्स का है मैं आपको करवा देता हूँ करेंगे डॉपलर इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट क्या होता है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी p प्लस माइनस velocity of observer divided by v plus minus of source to the source frequency ये एक फॉर्मूला होता है इसमें कौन रेस्ट पर है ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट हाँ this जी. is formula reduced and it is moving towards or away a man standing the observer velocity or a child on a sledge blows a whistle before an of sound in air initial frequency तो अब वो उससे दूर जा रहा है तो हम यूज करेंगे प्लस इनटू एफ एस अभी जस्ट आपने ये लिख अभी आपको समझ नहीं आएगी कि आपने टॉपिक नहीं बिल्कुल तो नहीं समझ आ दिस 40 40 प्लस वी एस कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय द सोर्स फ्रीक्वेंसी चेक करें क्या आंसर आता है 369. 869. 86 ये फॉर्मूला वेव से जब हम वेव्स वाला पढ़ेंगे ना फॉर्मूला में आपको समझा. describe and explain qualitatively the variation if any the frequency of sound तो आप क्या कह सकते हैं ऊपर जाते वक्त उसकी स्पीड क्या हो रही है
कम हो रही है ना, हाँ जी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इन, आप कह सकते वन हैं ओवर सी। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी द सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला। हम्म। वेलोसिटी अगर कम हो रही है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लिखेंगे द वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड एंड सोर्स, सॉरी, velocity of child and edge decreases. Observed observed फ्रीक्वेंसी। frequency increases. अब ये वेव्स पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों फार्मूला हमने ऐसे लगाया है, वाई वी यूज द साइन, वाई नॉट वी आर यूजिंग। तो ये सारी चीजें ठीक है। काफी है। हाँ जी। ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज़।